Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 6, welcome to your science class. Previously we have discussed the topic solution from chapter number 7, mixture, on page number 79. In today's class, I will share you the answers of test yourself which are related to the previous topic solution. These are 6 questions which you have to write down in your neat notebooks. Dear students, in this class we also read the next topic, separating solids from liquids. Actually, what is the main purpose of reading this topic and the relevant topic afterwards? That sometimes when we mix different things together, we cannot separate them out easily. So there are some techniques, there are some methods. By using them, we can easily separate one substance from another. So purpose of reading this topic, separating solids from liquid, is actually based on your two method or methodologies. First one is separating a suspended solid from a liquid, while the another purpose or method is separating dissolved solids from a liquid. So first we will study the method related to it is separating a suspended solid from a liquid. Before reading the main methods of separating substances, there is an interesting information given related to this fish. This fish survives by using its gills to extract oxygen dissolved in the water. इस फिश के बारे में ये बताया जा रहा है कि there is a special breathing organ which is called gills, जिन्हें हम उर्दू में गलफड़े कहते हैं. लिहाजा मछलियों में ये गिल्स नॉर्मली मछलियों को पानी के अंदर इनके सर्वाइवल में, इनको ज़िंदा रहने में मदद देते हैं, क्योंकि इन गिल्स की मदद से, इन गलफड़ों की मदद से जो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ये पानी के अंदर से जो मिक्स्ड ऑक्सीजन होती है उसको अपने लिए एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, यानी अपने लिए हासिल करते हैं. और इस तरीके से पानी में रहने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाते हैं, यानी वो ज़िंदा रह सकते हैं. Now students, let's begin with the main topic, separating solids from liquid, given on page number 80 of chapter number 7. So open up your page number 80 in order to understand the main concepts. Separating solids from liquids, यानी liquid से solids को separate करना, यानी अलहदा अलग करना. Scientists often use to separate the one substance from another. साइंसदान अक्सर इस चीज़ को ज़रूरी समझते हैं, इस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं कि किस तरह से वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को अलहदा करें. इसके लिए उन्होंने कुछ मेथड यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए हैं और आपने इनको अंडरस्टैंड करना है. सपोज़ वी वांट टू सेपरेट अ solid from a liquid. So what techniques, what methods which you will apply? The first method, separating a suspended solid from a liquid. एक liquid से suspended solid का मतलब ये है कि जो dispersed solids हैं या solid के अंदर जो particles हैं उनको किस तरीके से आप अलहदा करें जिससे बिल्कुल आपको clear liquid हासिल हो जाए. यूँ समझ लें कि लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं और ये सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हमें रिमूव करनी है, इनको अलहदा करना है लिक्विड से. सो फॉर दिस पर्पस द सस्पेंडेड सॉलिड कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेथड बाय विच द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड कैन बी रिमूव्ड? दिस मेथड इज़ कॉल्ड filtration. दिस मीन्स pouring the mixture through filter paper. Why the name given to this method filtration? Because in this
we have to use this special kind of paper. What is the name of this paper? Filter paper, in which the mixture of solid as well as liquid will be poured into the container by passing through the filter paper. The liquid, the filtrate, passes through the small holes in the paper, that is the filter paper, but the solid, which is called the residue, is not passed through the filter paper, so that's why it is trapped. Now, for further explanation, you have to observe this figure, in which we have first prepared the mixture of sand in water. So what will be the sand? It is the solid, suspended solid, while water will be the liquid. So we first of all mix sand and water in order to make this mixture. Now we have to separate sand from water. So we will pour this mixture in the form of liquid into the filter funnel, where we have placed the filter paper. Here you can see that this filter paper, while the outside you can also see a filter funnel which is made up of plastic or glass. As you will pour the solution or mixture through the filter paper, what happens that the sand particles as residue will be left over the filter paper, while the drop which you are now observing here, these are the drops of water which are passing through the filter paper. They are not trapped inside or over the filter paper, that's why they are passing through and collected in this flask, which is placed at the bottom of this whole setup. This is conical flask, in which you can see the blue shaded area, which is representing the drops of water passing through the filter paper. Now I'm going to tell you the reason why the sand particles are trapped as residue over the filter paper and why the water drops are passing through the filter paper. So as you can read from here that there are small holes in the filter paper. Actually, we cannot see these holes because these are microscopic holes or pores, or you can also say openings. These openings allow only the water to pass through them, while the sand particles, which are bigger in size as compared to the water drops or water molecules, that's why the sand particles will be left over. And these pores of filter paper will not allow to sand pass through these pores. That's why the sand will be collected as residue, while the drops of water will be collected as filtrate. So what is filtrate? This is the clear water which is collected in the flask, while the residue or residues are the sand particles which will not pass through the filter paper. That's why they are trapped or left over the filter paper. Dear students, now come to the next paragraph of this method of filtration. This paragraph is actually indicating the application of filtration. कहाँ पर आप filtration को apply कर सकते हैं? So this method is good for separating sand or chalk from water because they are insoluble in water. इस method का best use जो है वो उन तमाम insoluble substances के लिए होता है जो पानी में हल नहीं हो सकते, जिस तरह से sand और chalk. ये वो substances हैं जिन्हें आप पानी में हल या इनको dissolve नहीं कर सकते. इसीलिए फिल्ट्रेशन के मेथड से आप पानी में हल शुदा या गैर हल शुदा चीज़ें जिन्हें आप सैंड और चॉक कहते हैं वो आसानी के साथ अलहदा कर सकते हैं. However, it cannot be used to separate dissolved solids from water because all the solution would pass through the filter paper. अलबत्ता आप वो तमाम dissolved solids जो कि आपने पानी में हल कर दिए हैं, जो आसानी से पानी में हल हो जाते हैं,
उनको अलहदा करने के लिए सॉल्यूशन से आप इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है? बिकॉज डिज़ोल्व सॉलिड्स हैव ऑल्सो स्मॉल साइज, दैट्स वाई दे आर और दे कैन ईज़िली पास थ्रू द फिल्टर पेपर। क्योंकि डिज़ोल्व सॉलिड जो हैं, जो कि पानी में, जो कि आपका क्लियर लिक्विड है, उसमें आसानी के साथ हल हो जाते हैं। और हल होने की वजह यही है कि उनका जो साइज़ होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के अप्रॉक्सीमेट साइज़ के इक्वल होता है, और उस छोटे साइज़ की वजह से वो फ़िल्टर पेपर के स्मॉल होल्स में से भी आसानी से पास हो जाते हैं। लिहाजा आपको तमाम जो सॉल्यूशन है वो क्लियर फिल्ट्रेट ही की शक्ल में मिलेगा, और उस वाटर के अंदर आपको वो सॉलिड भी मिलेंगे जो डिज़ोल्व हो चुके हैं। So the best method in order to apply the filtration in the technique कि आप जिस method को भी apply करेंगे, you have to clearly indicate that either the substance is soluble or insoluble. Dear students, I hope all the concepts of this topic are clear to you now. Join me tomorrow for some more interesting topics. Until then, Allah Hafiz.